Now today we will start the module number 3, that is gamma and beta function, and then we will start the rectification. Okay, so let us begin our module 3, gamma and beta function. Gamma and beta function. Okay, first of all we will define what is the gamma function, then we'll go for the beta function and their properties. Okay, so define gamma function. Gamma function here. So those integral that cannot be solved by the usual methods, so that type of integral we will solve by using beta and gamma function. Okay, so we define first the what is the gamma function. The function of n, the function of n, here the condition is n is positive, defined by the integral there is the integral a limit 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx is called the gamma function, okay, and it is denoted by the symbol gamma of n. Okay, this is the notation for gamma function. This is not a square root. Okay, gamma of n, thus we write gamma of n, and this equal to integral of limit 0 to infinity e raised to minus x raised to n minus 1 dx. Okay, so name this equation number 1. So in this way we will define the gamma function. The gamma function is what? A function of n. A function of n where n is positive integer is defined by the integral of the type integral of limit 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx is called the gamma function. Okay, the notation for the gamma function is this, that is the gamma of n. You can read this gamma of n. Thus, if this is the gamma function, then this gamma function is equal to the integral. Okay, so this is the formula for the gamma function, and we name this equation number 1. Okay, so the gamma function is also known as the gamma function is also known as integral of limit 0 to infinity e raised to minus x and x raised to n dx, and this equal to what? Gamma of n plus 1, and name this equation number 2. Okay, now see here, if there is n minus 1, the power of x is n minus 1, so the gamma is the gamma of n, so your function will be what? Gamma of n. Okay, if there is only n, so here will be n plus 1, here will be n plus 1. Okay, so this n plus 1 is greater than this power. Okay, x raised to n, so here n, so here will be n plus 1. Here if there is a n minus 1, so here will be only n. Okay, now the second form of gamma function is there is another form of gamma function. Second form of
gamma function, gamma function. Okay. So what is the second form of gamma function? The second form of gamma function is given by gamma of n, and this equal to 2 times of integral limit 0 to infinity e raised to minus x square and into x raised to 2n minus 1, 2n minus 1 and dx. Okay, this is the second form of the gamma function. Actually this equation number 1 and 2 both are same type of the gamma function. This is the another form of the gamma function. Okay, for sake of convenience I name this equation number 2, otherwise this and this both are the same. Okay, name this equation number 3. So generally we will use to evaluate the integral by the equation number 1 only. Okay, this is the main formula for the gamma function. Okay, so whenever we will solve the problem we will use only formula number 1. So there is the recurrence relation of gamma function. So we write recurrence relation of gamma function. Recurrence recurrence relation of gamma function. Gamma function. What is the recurrence relation of gamma function? Okay, see here. Both the integrals are same. Both integrals are same. Means what? So I told you earlier the equation number 1 and 2 both are same. So we can have gamma of n plus 1 and this equal to n gamma of n. The recurrence relation of gamma function. Okay. So this is the simply factorial form. Okay, you know the factorial. What is the factorial? N factorial can be written as what? 1 into 2 into 3 into n factorial is what? That is 1 into 2 into 3 into so on. That is n n minus suppose 3, फिर n minus 2, फिर n minus 1 and n like this. This is what? N factorial. Similarly, the gamma function treat as a factorial form. Okay, so we will see how it comes. So can you prove this relation? So let us consider consider the equation number 2. What is the equation number 2? N plus 1 gamma of n plus 1 equal to integral limit 0 to infinity e raised to minus x and x raised to n dx. Okay, this is the your equation number 2. Okay, so for this what I have to do, just we will evaluate by using integration by part. So therefore we can write gamma of n plus 1 equal to just evaluate this by arranging Liet form. Liate. First is what? First algebraic, then exponential. Okay, so L for logarithmic, I for inverse, A for algebraic, and T for trigonometric, and this is exponential. So we first arrange the given function in Liet form. So we write integral limit 0 to infinity x raised to n and then e raised to minus x dx. Now what? Now evaluate. This is the u and this is v. You know the formula for integration. Integration of u v dx equal to what? U integration of v dx minus integration of then derivative of u with respect to x, फिर integration of v dx then dx. Okay, this is the formula for u into v. So we will apply the formula for this. So first is what? U. Your u is x raised to n. X raised to n. Okay, and v. V is what? This one. So integration of this is e raised to minus x by coefficient of this, that is minus 1. Okay,
Now provide limit 0 to infinity. Okay. Now minus integration of big integral, this one, that is 0 to infinity. Okay. Now take derivative of u. Derivative of u is this. Derivative of u is what? X raised to n. So take derivative of this. This become n x raised to n minus 1. Okay. Now integration of v. So take integration of v. Integration of v will be what? E raised to minus x by coefficient. Your coefficient is what? Divide by its coefficient. Your coefficient is minus 1. Okay. And then the last is dx. Okay. So now simplify. Let us simplify this. So after simplifying, you will get this one is minus. So minus x raised to n e raised to minus x, and provide limit 0 to infinity, minus minus here, plus. So integrate, I'm taking n outside because this is the constant. So integration of 0 to infinity, we write e raised to x first, then e raised to minus x we write first, then into x raised to n minus 1 and dx. Okay. Now just see. So let us move to the next page first. So for this, we write therefore gamma of n plus 1, and this equal to, I am providing upper limit, that is what? X replaced by infinity. X replaced by infinity. So this will infinity raised to n, that is infinity, and e raised to minus infinity, minus minus here plus. Now we will put 0. Anything multiplied by 0 is 0. Okay. And plus n, and plus n here, or then integral. See here, we observe that this integral is what? Integral limit 0 to infinity e raised to minus x, x raised to n minus 1 is here 1, equation number 1. This is what? This is your gamma of n. Just write down instead of that. So next, so we write here gamma of n. Why is this so? Because we write down equation 1 from equation 1. Okay. So this equal to, see here, e raised to infinity is what? 0. So 0 plus everything is 0 here, and plus n gamma of n. Okay. So in systematic way, you can write this gamma of n plus 1 equal to n gamma of n. Okay. Hence we prove this. Hence we prove this. Okay. Now similarly you can prove, similarly you can prove that gamma of n equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. Okay. See here, if there is gamma of n plus 1, so you have proved that n gamma of n. Okay. If there is gamma n, then n minus 1 and gamma of n minus 1. Okay. If there is again n minus 1, so ऐसे आप इसका कम होता जाएगा repeatedly. Okay. So in general आप लिख सकते हो, so in general and so on, and so on. Okay. So in general you can write, in general, if n is a positive integer, is a positive integer, then what happen? If n is positive integer, then applying this name this equation number star integer, then applying equation number star repeatedly, we get, repeatedly we get gamma of n plus 1
and this equal to what? This equal to n gamma of n. Okay, if you apply the definition of gamma of n, then you will get this n as it is. So instead of gamma of n, we write this n minus 1 gamma of n minus 1. Okay, now if you apply the definition of gamma of n minus 1, you will get n minus 1, then n minus 2, and gamma of n minus 2. Okay, and in this way you will have n factorial. Means what? This will reduce, uh, means dash 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 up to. So repeatedly you will proceed it, so you will get n minus 1, n minus 2, and n minus 3, and so on up to 3 to 1. Okay, but this is what? This is simply n factorial. Okay, in this way you can prove that gamma of n plus 1 equal to what? N factorial, like this. You got it? Yes or no? Yes, sir. चलिए इसमें कुछ हम नोट लिखते हैं. तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया कैसा आया, बाकी ये यूज करेंगे फार्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करने में. ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं जो कि आपको याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त. इम्पॉर्टेंट note. Okay, so note number 1, in note number 1 we will have the gamma of 1 by 2, and this is equal to what? Square root of pi. ठीक है, ये गामा है और ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, इसमें फर्क समझने का, इसको गामा ऑफ एन नहीं लिखना है आपको. एंड नोट नंबर 2, अगर आपको गामा ऑफ 1/4 कहीं दिखाई दिया और इनटू में गामा ऑफ 3/4, तो इसको आप क्या लिखोगे? √2 इंटू पाई. ठीक है, दिस इज द पाई. ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है. जब भी प्रॉब्लम में आएगा ए तो आपको ए लिखना है, जब भी ए आएगा तो आपको ए लिखना है. ठीक है, now let us move to the problem, that is the problem based on the type number 1. So we will write type number 1. The integral of the form the integral of the form which form? Integral limit 0 to infinity e raised to minus ax square, okay, dx, or integral limit 0 to infinity x raised to m e raised to minus ax raised to n dx. Okay, then we will use substitution. Then we will use, or we shall use substitution with substitution. Just simply this power equal to आपको क्या पुट करना है? So t. Okay, we will use substitution ax raised to n equal to t. Okay, and solve them. So whenever you will have the integral of the form 0 to infinity e raised to minus ax square dx, or integral limit 0 to infinity e x raised to m into e raised to minus ax raised to n dx, then we will use the substitution ax raised to n equal to t. Okay, here we will use bad power equal to t. What is the bad power? Your bad power is ax square, ax, this is the not square, this is the n.
we will use the substitution ax raised to n. Okay, so this substitution we will use while solving the problem. So let us do one problem based on this, then you will understand the type better. So let us move to the problem. Example. Example. Evaluate the integral. Evaluate the integral. Integral or limit 0 to infinity x raised to 1 by 4. X raised to 1 by 4 into e raised to minus root of x and dx. See how difficult the integral is it. So let us evaluate this integral. Okay, so first of all we will write let I equal to this integral limit 0 to infinity I means integral. Okay, x raised to 1 by 4 into e raised to minus root x and dx. Okay, now what I have to do, we will put exponential bad power. What is the exponential bad power? What is the exponential bad power? Square root of ax equal to t. Okay, so this implies that x and this become t square. Getting? Now find the derivative of this. So if I finding derivative with respect to t, differentiate this. So you have dx equal to 2t and dt. Okay, now immediate you have to change the limit. Now change the limit when see here all the terms are in terms of x, so limit will be what, the lower limit is x, sorry, lower limit x equal to 0 and upper limit is x equal to infinity. So lower limit when x equal to 0, so this implies that t will be what, when x equal to 0 then t will be, I'm Zero. putting I'm putting here 0, so t will be what, यहाँ पे this will get 0, you will get here 0. So when x equal to infinity, then again you will have t equal to what, t equal to infinity. So there, to just change it. Therefore we will write I equal to, I means your integral. Okay, so integral limit your x running from 0 to infinity, so your limit change 0 to infinity. So actually it will not change, but we must have to uh, write like this. Okay, sometimes it will not change and sometimes change. So instead of x raised to 4, what we write here, x raised to 4. So just replace the value of x here. So just write down T1 uh, by 2. yes. So we're putting here x is t square raised to 1 by 4. Okay, and e raised to minus, instead of this we putting here square root, we put here t, and instead of dx we put right here 2t and dt. Okay, just simplify this. So 2 is constant, I'm taking outside 2, integral limit 0 to infinity. So this can be written as 2 1 ja 2 and 2 2 ja 4, t raised to 1 by 2 and e raised to minus t, t and dt. So base is same, t and t here, and the power will here 1. So 2 1 ja 2 and plus 1 3. So you will get 3 by 2. So 2 integration of 0 to infinity, 0 to infinity, we will write here uh, t raised to 3 by 2 and e raised to minus t and dt. Okay, uh, is this correct here? Yes. 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 Now see. Now see. Now we will use what? We will use the definition of gamma function. So for this, what I have to do? So if I write this as, so this equal to what? 2 times of integral limit 0 to infinity, 0 to infinity. Okay, and we
just write in proper way, e raised to minus t, okay, and x means what, t raised to, if I write here 5 by 2 minus 1 and dt, is there any change? Is there any change? No No. change, because if you cross multiply, 2 1 are 2 and 5. 5 minus 2 is what? 3 by 2. So we can write like this. Why is this so? Because we will have the definition of gamma function. This equal to integration of limit 0 to infinity e raised to minus x and x raised to n minus 1 and dx. This is the definition of gamma function. Okay, so compare this. So e raised to minus x, that is e raised to minus t. Okay, now x, that is t, correct. Now x raised to n minus 1. Here n will be what? 5 by 2, or minus 1 equal to minus 1. So by definition of gamma function, you can write 2, or but this integral is equal to what? Gamma of n, but n is what? 5 by 2. So this can be what? Gamma of 5 by 2. Are you getting this much? Are you Yes. getting this much? Yes, sir. You Yes, don't sir. Yeah, so see, see here, you don't have to evaluate this integral. Just you have to use the definition of the gamma function, either gamma function or beta function, whichever suitable. Okay. Now see here. Now after this, we know the relation between we know the recurrence relation of gamma function. You know very well. This is what? Gamma of n. 2, since gamma of n can be written as what? N minus 1. Gamma of n can be written as what? N gamma of n minus 1, like this. Sorry, gamma of n is what? N minus 1, then gamma of n. So n minus 1 and gamma of n minus 1. Okay, we will use the recurrent this relation. So just put this is your n. So you will write 5 by 2 minus 1 and into gamma of 5 by 2 minus 1. Okay, just simplify this. So this equal to, we write here 2. This become what? 3 by 2. Okay, 3 by 2, and write down the gamma of 3 by 2. Okay, so next step we write here. So I am writing here 2 into 3 by 2 as it is. Don't cancel anything. Now again we will apply this formula over here. So you will get 3 by 2 minus 1 and gamma of 3 by 2 minus 1. Okay, so this equal to, you will have 2 into 3 by 2, and just solve this become 1 by 2. Okay, and this is what? Gamma of 1 by 2. 2 1 is 2, minus 2 and plus 3, that is 1 by 2. Okay, and this equal to we will write this, just cancel this, or this and this cancel. Okay, we will write 3 by 2. Okay, and gamma of 1 by 2, but gamma of 1 by 2 is what? Gamma of 1 by 2 is root pi. Root pi. 3 by 2 root pi. Okay, this is your complete answer of the given problem. Since यहाँ पे आप लिख दो, since gamma of 1 by 2 equal to root pi, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था. ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, आपको याद रखना है. सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे देखो, आपके जो प्रॉब्लम दिया है उसको मैंने क्या किया, लेट आई मतलब इंटीग्रल. ठीक है, आई इक्वल टू, इसको बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हमने इसको लेट किया. इसलिए मैं आई इक्वल टू मतलब आपका ये इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल टू. ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या लिखाया था टाइप में. आइए टाइप पे, कि आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स रेस टू एन, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है, इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एम और ई रेस टू माइनस ए एक्स रेस टू एन. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको क्या पुट करना है, ए एक्स रेस टू एन टी पुट करना है. ठीक है, यहाँ पे हमारा इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे एम कितना है, एम आपका 1/4 है, और बाकी ई रेस टू सॉरी एक्स है. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू हाफ लिख सकते हैं ना. तो इसी फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ.
तो अगर उस फॉर्म में है तो आपको एक्सपोनेंशियल का पावर इक्वल टू टी पुट करना है, ए वाला पावर, सर एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा 1/रूट में आएगा, फिर उसको ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो इसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट, हमको डीएक्स की वैल्यू निकालना है। इसलिए उसको अच्छे से मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग कर दिया तो इसको इधर का रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर 2 हो जाएगा। और बाद में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, डीएक्स की वैल्यू निकल आया। जब भी आप पुट करोगे तब उसका लिमिट हमेशा आपको चेंज करना है, ये याद रखने का। ठीक है, सभी हमारे किस में है, एक्स में है। तो आपने क्या किया, एक्स को टी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका लिमिट भी टी में ही आएगा। तो आपका लिमिट किस में चेंज हो गया, जीरो से इन्फिनिटी में चेंज हो गया, टी में आ गया। तो वैल्यू को रिप्लेस कर दो। यहाँ पे कोई एक्स दिखाई दे रहा है नहीं, सभी किस में फॉर्म में है, टी में फॉर्म में है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, ए पुट किया था, कहाँ, ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, बाकी पावर वैसे लगाया एक्सपोनेंशियल। और स्क्वायर रूट के प्लेस पे क्या पुट किया मैंने, टी पुट किया। बाकी डी एक्स के प्लेस पे हमने ए वैल्यू निकाला। सब जगह डाल दो, इसको सिस्टमेटिक थोड़ा अरेंज करके लिख दो। हाँ बाकी सर, वो वही जो अपने, आप हाँ सर जो आपने वही मतलब सॉल्व किया नीचे उसको, तो आप वहाँ पे वो टी स्क्वायर है फिर रेज टू 1/4 है, हाँ। तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया? क्यों सॉल्व किया मतलब क्या है इसको, अरे यार ये टू है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 में, तो आपको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो टी का पावर कितना हुआ, 1/2 हुआ ना। अच्छा हाँ सर, समझा। हाँ। सर हाँ। सर जहाँ पे आपने रूट एक्स इज इक्वल टू टी लिखा है, वहाँ पे माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू टी नहीं लिख सकते? अ, सेकेंड लाइन में कहाँ से, यहाँ पे, ऊपर से सर, जहाँ जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू टी लिखा है ना आपने, हाँ। तो उसकी जगह मैं माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू टी नहीं लिख सकता? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल में क्या है, माइनस में आएगा ना गामा फंक्शन, देखो ई रेस टू माइनस है ना यहाँ पे। अच्छा, मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ, उस फॉर्मेट में होगा तभी गामा फंक्शन का डिफिनेशन यूज कर सकोगे। सर ओ हाँ सर। सर वो टी रेस टू 5/2 - 1 कैसे आया सर? 3/2 था ना, टी रेस टू 3/2 था। हाँ, इसको देखो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये वाला इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला ही मिलेगा ना, मतलब ए इसके इक्वल ही है ना। बोलो, ये देखो 5/2 है, इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 - 2 कितना आएगा, 3/2, मतलब ये इसके इक्वल ही है ना 3 के। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे क्या है, n - 1 है, यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है क्या, नो हाँ, सर। नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, देखो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे करने का आपको, जिससे यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, ये पावर में, यहाँ पे पावर में 3/2 है। हमको क्या चाहिए, n - 1 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा और बाद में एक सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हो। ठीक यस है, सर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, t⁻5/2, इसके साथ 2 1 जा 2 और 3, 5/2 - 1। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया मंगेश। यस यस सर। सर। चलिए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम दूंगा, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल नंबर 2, prove that integral of limit 0 to infinity root of y e raised to minus y square dy into integral of limit 0 to infinity e raised to minus y square by root of y and dy, and this equal to what, pi by 2√2। ठीक है, ये रूट है, गामा नहीं है, ये प्रूव करना है। देखिए इसको कैसा प्रूव करने का, प्रूफ, ओके। लेट आई इक्वल टू, मैं आपको आई इक्वल टू लिख रहा हूँ, इंटीग्रल और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ वाई ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई इन टू,
माइनस प्लस नहीं है, इंटू है, इंटीग्रल लिमिट 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस स्क्वायर e raised to minus y square divided by square root of y and dy. Okay, and name this equation number 1 डालो इसको, ठीक है। अभी इसको अब ऐसा लिखो, therefore I इक्वल टू, यहाँ पे डालो I1 इंटू I2। ओके, I1 इक्वल टू I2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इसको दो, ठीक है। वेयर आप I1 यहाँ पे ले लो, I1 इज व्हाट, इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity square root of y e raised to minus y square and dy. Okay, now I2 equal to integral limit 0 to infinity e raised to minus y square by square root of y and dy. Name this equation number 2. Now consider I1 equal to integral limit 0 to infinity square root of y into e raised to minus y square and dy. ओके, चलिए इसको थोड़ा मैं और ये लिख लिया, तो इसको और अच्छे से लिख लो। therefore I1 इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इसको हम कैसे लिखेंगे, y है ना, तो दिस इक्वल टू y रेस टू 1/2 and e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। ओके, देखिए कौन से फॉर्म में है, टाइप नंबर 1 के फॉर्म में है, तो उसके लिए क्या पुट करते हैं हम, जो एक्सपोनेंशियल का पावर रहता है उसका इक्वल टू क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं। तो यहाँ पुट कर दो आप, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। अभी सॉल्व करो, तो अब क्या करने का, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर सॉरी ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको, इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। 1 को सॉल्व किया, 1 को नहीं 2 को सॉल्व किया आप, तो आपको जो वैल्यू आएगा इसको इक्वेशन नंबर आप 4 दे दो, और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन नंबर 5 दे दोगे। नाउ पुटिंग 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा यही आएगा, वो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप लिख सकते हो 10 दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। गेटिंग, इतना कर सकोगे आप? यस सर। हाँ, तो अब घर पे कीजिए, बहुत आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। टाइप नंबर 2 नहीं हो पाएगा? नो सर। नो सर, नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। चलो इसी को करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करो। हाँ सर करो। Okay, so we put here, what we have to put, we have to put y square equal to t, which is of the type this one, so exponential power equal to, we have to put t, so just put here. So this gives this implies that I'm taking power 1/2 on both sides, so this become what, y equal to t raised to 1/2. Okay, t raised to 1/2. Now differentiate this, so you will get, I am differentiating with respect to t, so you have dy equal to, so this is 1/2 and t raised to n minus 1, that is 1, t raised to n minus 1, how much this, that is minus of 1/2, yes or no, माइनस ऑफ, जस्ट राइट डाउन, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज 1/2 -1 एंड dt, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो,
So this equal to dy and equal to 1 by 2 t raised to 2 1 ja 2 minus 2 and plus 1, that is minus 1 by 2 and dt. Okay, now change the limit. Whenever you will use substitution, just change the limit. When we write when t equal to, sorry, in terms of y, so when y equal to lower limit is 0, then you will get t equal to what? You will get t equal to 0. Okay, when y is infinity, so again you will get t is infinity. Okay, so just use all this value in this integral. So let us move for next page. uh, Next page. Okay, so therefore I1 and this equal to इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity. चलिए y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? t रेस टू 1 by 2. चलो यहाँ पे रखो t रेस टू 1 by 2, लेकिन उसका पावर कितना है बोलो? 1/2. 1 by 2 है, तो इसका 1 by 2. एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में, डायरेक्टली 1/4 लिख दूंगा तब बोलोगे सर कैसे आया. और e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर क्या है? t है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? e रेस टू माइनस टी, करेक्ट. और dy के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 1/2 t रेस टू माइनस 1/2 देन t रेस टू माइनस 1/2 dt. यही था ना? जरा देख लो आप फिर से. 1/2 t रेस टू माइनस 1/2 dt. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं. 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है. इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity देन t रेस टू पावर 1/4. ओके, t रेस टू पावर 1/4 हो गया, और यहाँ पर भी है. चलो इससे भी निपटेंगे अभी. एंड t रेस टू 1/2 नेगेटिव एंड e रेस टू माइनस t dt. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड. 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity, so t रेस टू 1/4 माइनस 1/2 और इंटू ई रेस टू माइनस टी एंड डी टी. अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे ले लो और आप वहाँ पे सॉल्व कर लो एलसीएम लेके. यहाँ पे एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 जाएगा, ये कितना आएगा? -1/4 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity t रेस टू माइनस 1/4 गेटिंग एंड e रेस टू माइनस t dt. अभी देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, तो क्या कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? 1/2 ऐसा लिख दिया मैं, और इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity. आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? t रेस टू माइनस 1/4 ऐसा लिखा. ठीक है, पहले मैं ऐड करूँगा, 1 ऐड करूँगा, देन सब्ट्रैक्ट करूँगा 1. ठीक है, कुछ फर्क गिरेगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 आपको ये मिलेगा, और इंटू ई रेस टू माइनस टी एंड डी टी. ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity एंड टी रेस टू. चलो सॉल्व करो, केवल प्लस वाले के साथ ही मैटर सॉल्व करना है. इधर जाएंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना बचेगा? 3/4. कितना बचेगा? यस सर 3/4. 3/4 माइनस 1 और इंटू ई रेस टू माइनस टी डी टी. ये तो हम उसके फॉर्म में आ गया गामा के. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर. आया ना? तो आ गया, तो चलो अप्लाई कर देते हैं. तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं उसके प्रॉपर फॉर्मेट में. इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity, so e raised to minus t and t raised to 3/4 minus 1 dt. और कंपेयर करो गामा से तो आपको क्या मिलेगा? n आपको 3/4 मिलेगा. तो दिस इज 1/2
ये वाला कांस्टेंट, और इंटीग्रल की वैल्यू क्या होता है, इसकी होता है 3/4। ये कैसे आया, बिकॉज ऑफ गामा ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 dx से आया। ठीक है, ये बोला कि मैं आपको 900 देता हूँ, 100 रुपये तो आपके पास है, 1000 रुपीज़ हो जाएगा। इसने 1000 रुपीज़ बना दिया यहाँ पे। एंड दिस इक्वल टू, इसको और आगे भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे बाद में सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इधर ही रहने दो। ठीक है, इसको इधर ही रहने दो, क्योंकि 3/4 का रिलेशन हमको देखो पता है, नोट में लिखवाया था। हाँ, नोट में आपको लिखवाया था, कहाँ पे, यहाँ पे देखो। हाँ, कहाँ गया, यहाँ पे 3/4 आया ना। अभी एक बार रिड्यूस करूंगा ना तो 1/4 उसमें मिलेगा आपको, तो उसका रिलेशन आपको इधर मिलेगा। देखना अभी, देखना अभी कितना मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये हो गया। इसको अब क्या इक्वेशन हम देखो, इक्वेशन नंबर कितना हो चुका था, हाँ 3 हो चुका था। चलो इसको मैं 4 देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4। ये नहीं है, हाँ ए वाला है। नाउ अभी जाइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे लिखो नाउ। नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर, कंसीडर इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे, ए वाला। तो ये रेस टू, जरा बताओ तो मुझे, कंसीडर आई टू I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी टू माइनस ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय रूट रूट सर वाई। टाइम हो गया। टाइम हो गया ना, चलो इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कर देंगे सर, हाँ हाँ, सॉल्व कर इसको देंगे। आपका प्रूफ मतलब कि आपका जो दिया है वही आना चाहिए। ठीक है, चलो ओके द सर, रेस्ट पार्ट इज होमवर्क फॉर यू, सो दिस इज थैंक द homework for you. Please do this problem at your home and we will meet soon in the next lecture. Next lecture कभी है on Monday. Thank ठीक you, है, sir. thank you all of you for joining to us. कितने लोग थे आज, 40 के अब थे शायद, 41 थे, 40। हाँ चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। 40 ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू।